যদি কেউ তোমার ডাক শুনে না আসে তুমি একলা চলো রে, that means if you are asking for help from somebody and if you don't get help from any quarters, you should start alone. And that's what I did. Why does one become a doctor? In fact, I was invited to one of the lawyers, one of the law institutions, for a lecture on health and disease. So the vice chancellor was also there, the professors were there, and there a young boy, I told him, tell me what you want to become. So he said he wants to become a criminal lawyer. So I asked him, okay, and I asked many people. Somebody wanted to be a corporate lawyer, somebody wanted to be a criminal lawyer, somebody wanted to be just a lawyer. And so I asked the professor, why do we teach law? So that there is no crime in the society. How many people are working for that? We need to ask these lawyers and these law institutions, how many people are working for that there should be no crime in the society. In fact, law courses are meant for that. Why do you become a doctor? Was always my quest. In fact, when I did my MBBS, that time only I knew that, MBBS is about managing a disease, not curing. So for 1 year I left MBBS and I went for civil services because I didn't want to enter into something that I am not perfect in. Unfortunately, I could not qualify civil services, so I drifted back to medical. Then I did my MD, my PhD, and I'm still doing my PhD on the pineal gland. Nonetheless, in this process, what I have developed is I am a doctor with a difference, and I have called upon many doctors. First, when I started during COVID times, there was none. There were none. But today, I have a battery of doctors after me and a battery of fantastic people like Jonita who are there with me, and we are very confident that we will make this world a better place to live in. And Ek Bharat, Shresth Bharat, Swasth Bharat. If we can add this to the dimension of Ek Bharat, Shresth Bharat, if we can add Ek Bharat, Shresth Bharat, Swasth Bharat, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो ना आप एक रहेंगे ना श्रेष्ठ होंगे. बहुत सी बातें समझ में भी नहीं है. Which is why I started with this, and I am a doctor. I want to become a doctor जो सोसाइटी से डिजीज को निकाल दे, सोसाइटी में डिजीज ही ना हो. इसलिए फिर हमने YouTube चैनल्स में कई इसमें इंटरव्यूज देने शुरू किए, और मैंने इतनी लंबी चौड़ी बीमारियों को इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आप एक बार YouTube में कोई भी डिजीज का प्लेलिस्ट में देखिए, आपको वो डिजीज बहुत सिंपल दिखे. और मैंने जानबूझ के किया है इसे. That was on purpose. Because the more you complicate, common man के उससे ऊपर चला जाएगा और वो खुद ठीक नहीं होगा. वो खुद उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो ठीक होगा. एंड मेनी थिंग्स दैट आर देयर जो हम देखते हैं, हमें लगता है कि ये पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे हो गया, ये साइंटिस्ट लोग पता नहीं क्या बोल देते हैं. इन चीजों को जब तक आप सिंपल लेके, इट्स योर बॉडी, इट्स योर हेल्थ, इट्स योर डिजीज, यू हैव टू नो अबाउट इट. आपका राइट है जानने का, आपका हक है, और आपको पूछना चाहिए. आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस. व्हाई डू आई हैव टू डू दिस? विल इट क्योर मी और विल आई बी मैनेज ओनली? मेरे सिम्टम्स सिर्फ जाएंगे कि डिजीज ठीक होगी? फॉर्चुनेटली नाउ आफ्टर कोविड, बिकॉज कोविड के टाइम में हमने क्या किया, आई नीड टू मेंशन दिस.
At the time of COVID, when we saw, I don't feel any disease is a big disease. I feel it's a very small disease. So that is my feeling. And we feel that there is no disease on this earth that cannot be cured. Maybe I can't cure it, that's a separate issue. But there is no disease that cannot be fully cured. We just have to find out ways and means of doing it. So in COVID times, what happened was, we started with so many people sick, hospitals full, oxygen cylinders not available, and people going to the hospital not coming back. They're dying. And in the TV debate, they are debating what medicine should be given, this should have been given, this should have been given, that should have been given. Then we started a movement that time. Because as it is, I was very famous among my colleagues and friends. So I told them, any COVID patient that you meet, you bring them to me, either in person or online, and tell them to have faith, they will be cured. And that is what exactly we did. I'll repeat it, what we do, so that next time when something like this happens. Am I audible at the back? आपको आवाज आ रही है? आपको आ रही है? Thank you. So next time when something like this happens, COVID comes back again, there is monkeypox, there is any pox or many pox or mini pox, whatever. 10,000 diseases known to mankind, only 10,000. In fact, to be specific, 9,985. इतने ही diseases. लेकिन बीमार होने के तरीके दो ये. Either the pathogen will come from outside, like corona, or an inside cell will become pathogenic, like cancer. So, pathogen is a pathology generator. It generates the disease. So either it will come from outside, like in COVID times, if a pathogen coming from outside, virus, bacteria, fungus, black fungus, anything, what will it do? How will the body respond? Body will show response, no? How many people feel body will show response? Okay, so how will the body respond? The body will cause fever. Why did the body cause fever? To kill the virus. What is the world doing? Lower the temperature. Are we helping the body or harming the body? We are not helping the body in any way. There will be a discomfort. If you are getting fever, there will be a discomfort. इतना तो टॉलरेट करो यार, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाओ अपनी. यू आर सिक, यू आर नॉट हेल्दी नाउ, थोड़ा टॉलरेट करो. फीवर से मौत नहीं होगी. फीवर से you are not going to die. Maximum what will happen is you are going to get dehydrated. Dehydration can cause hypercapnia. Hypercapnia can cause death later on, but there are stages. You've got time. Fever, the body has raised temperature. Respect the body. There is a divine body. How many of you feel there is a divine body and divinity is what runs the body? How many of you feel that? Can you prove it to me? Because आजकल ना scientific ज़माना है, जब तक आप prove नहीं करोगे वो बोलेंगे it's your belief system. So can you prove it to me that this body is run by the divine? Yes sir. आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं विशेषज्ञों से पूछ लूँ. David ji, I am so happy to meet him. He knows the Bible, the Bhagavad Gita, and he has a combination of both, and he will be able to answer. But I just want to ask you, the rest of the people,
आपको लगता है डिविनिटी रन कर रही है बॉडी को? कैन यू प्रूव इट टू मी? यस सर, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि किसी भी डिजीज को अगर हमें बॉडी से पूरी तरह से यानी कि 100% अगर उसको हमें हटाना है तो उसके लिए जो डिवाइन एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, अगर हम उसको अपनी बॉडी में लेना स्टार्ट कर दें तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जो वाइट लाइट होगी वो पूरी तरह बहुत और बढ़िया। बहुत कम टाइम है, मतलब 2 मिनट 3 मिनट, अगर इंस्टेंट आपको पेन हुआ है तो 2 से 3 मिनट्स जो है वो पेन ठीक हो सकता है। या अगर कोई डिजीज आपको सफर कर रही है तो आप डेली इसको एनर्जी दें, सारे चक्रास को एक्टिवेट करें। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट यस, व्हाट आई फील इज यू राइट, लेकिन बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। मैं ना बहुत सिंपल भाषा में मैं वही बता रहा हूँ, मेरा काम है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत सिंपल करना। मैं आपको प्रूव करता हूँ कि आप नहीं रन कर रहे हो, डिवाइन पावर कोई पावर है। आपको लगता है, कैन यू प्रूव इट? कैन समबडी प्रूव इट टू मी? डिवाइन पावर यहाँ पर हम जहाँ पे बैठे हैं, आप जहाँ पे बैठे हैं, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, एग्जिस्ट करता है। कैन यू प्रूव इट? दिखाता हूँ आपको। हाथ ऊपर उठाइए सभी लोग। ये वर्टिकल लाइंस है, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा आपको। ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को मिला दीजिए और नमस्ते मुद्रा में आ जाइए। दोनों फिंगर्स बराबर हैं या कोई कम या कोई बड़ा छोटा है? जिस हाथ के फिंगर्स को आपने बड़ा करना है, छोटा है तो बड़ा कर लीजिए। अगर आपको बड़ा करना है, उस हाथ को ऊपर उठाइए और अपने मन में 5 बार बोलिए, मेरे फिंगर्स को बड़ा कर दीजिए। बोलिए ऊपर देख के, अपने मन में बोलिए। वापस लगा के देखिए। हुआ बड़ा? दिस इज व्हाट इज डिविनिटी। आप जो भी बोलेंगे डिविनिटी तथास्तु बोलता है। इसीलिए पॉजिटिव बोलिए, जो भी बोलिए पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि आप नेगेटिव बोलेंगे, अरे मैं तो बीमार हूं, आप बीमार, तथास्तु आप बीमार हैं। मैं बहुत ब्रह्म कुमारी को जो लोग जानते हैं वो ऐसे ही करते हैं। मैं आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम, ये सभी पॉजिटिव बातें बोलते हैं क्योंकि ऊपर से तथास्तु आता है। इसलिए जब भी जुबान खोलें अच्छी बातों के लिए। कमिंग बैक टू कोविड टाइम्स, coming back to COVID times. So there are only 2 ways of getting sick: pathogen coming from outside or inside cell becoming pathogenic. बाहर से पैथोजन आया, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? टेम्परेचर बढ़ाएगी। पूरी दुनिया कहां लगी है? नॉट ओनली एलोपैथी, आयुर्वेद ऑल्सो, नेचुरोपैथी ऑल्सो, होम्योपैथी ऑल्सो, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ड्रग्स जो टेम्परेचर कम कर सके। वी आर नॉट हेल्पिंग द बॉडी एनीवे। या तो हमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी का समझ नहीं आता है, वी आर लुकिंग फॉर ड्रग्स, वी आर लुकिंग फॉर वंडर ड्रग्स। आंध्र प्रदेश में एक आदमी ने दवा निकाल दिया, फीवर इमीडिएटली कम हो जाता है। प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स। बॉडी ने टेम्परेचर रेज किया है वायरस को मारने के लिए, उसको हेल्प करिए, हार्म मत करिए। तो टेम्परेचर रेज होगा तो वायरस मरेगा। हमने सभी पेशेंट्स को जो आए 40% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से आए थे, 40%, 50%, अगर ये हॉस्पिटल पहुंच जाते तो इनको तो ट्यूबेक्टमी होकर वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता। 15 मिनट आप उसको पेट के बल लेटा दीजिए, उसका 15 मिनट्स में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 98% आ जाएगा। पेट के बल लेटाइए और बेसिक समझिए कि जब आप पीठ के बल लेटते हैं, इफ यू लाइंग ऑन योर बैक, ओनली 1 nostril वर्क्स।
you want to take in air inside, है ना? Only one nostril is working. The moment you lie down on your stomach, both the nostrils open up. आपका एयर का इनटेक डबल हो गया, इमीडिएटली 98% जाएगा। 15 मिनट वेट करिए, इतना पेशेंस रखिए, डरिए मत प्लीज। डराने के लिए तो पूरी दुनिया है, जब तक डराएंगे नहीं तब तक बेचेंगे नहीं, और डर से ही सेलिंग होता है। आप रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे, ये डर का ऐड है। नहीं खाओगे तो प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा, ये होगा, मैल न्यूट्रिशन होगा। जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स टेलीविजन में आते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू एनीबॉडी हु इज गिविंग एन एडवर्टाइजमेंट, इज झूठ बेचना, क्योंकि सच्चाई को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ बिकता है। विटामिन ई के क्रीम से स्किन अच्छा नहीं होता, विटामिन ई खाना पड़ता है। यू हैव टू ईट विटामिन ई। विटामिन ई का रिचेस्ट सोर्स स्प्राउट्स। इफ पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट इज बॉदर्ड अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर स्किन, वो आपको बताएगी कि स्प्राउट्स खाइए, आपका स्किन अच्छा रहेगा। इसमें वो अपना क्रीम नहीं बेच पाएंगे। यू गेट माय पॉइंट? तो आपको जरा सा डीपली देखना होगा कि कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, वो डेफिनेटली झूठ है इसमें, लेकिन सच्चाई कहां है? कुछ ना कुछ सच्चाई होता है। सो बॉडी विल रेज द टेम्परेचर, यू हैव टू, एंड दिस रेज टेम्परेचर विल कॉज डिहाइड्रेशन। आपको हाइड्रेट करना है। आप अगर मेरा YouTube चैनल देखेंगे या YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे, @Dr. अवधेश पांडे नाम है उसका, आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे आपको 3 डे प्रोटोकॉल मिलेगा। करना क्या है? फर्स्ट डे इज डे ऑफ फास्टिंग, कुछ भी मत खाइए और जानवरों से सीखिए। जैसे कोई जानवर, जितने पेट्स हैं, आप लोगों के पास पेट्स हो, जैसे बीमार पड़ता है पहला चीज खाना छोड़ता है, और हमें आज तक नहीं पता चला कब क्या खाना है। फीवर में भी ढूंढते हैं कि खाना क्या है। अरे खाना छोड़ो यार। तो जब तक हमें ये बातें नहीं समझ में आएंगी तब तक हमें लगेगा अमेरिका में कोई ठीक बोल रहा है, वहां ठीक बोल रहा है। कम टू बेसिक्स। करना कैसे? सो अ वायरस विल कम, टेम्परेचर रेज विल कॉज डिहाइड्रेशन। हाइड्रेट द बॉडी। पानी पिलाइए उसको। नहीं पानी पी के तो वॉमिटिंग आता है, वॉमिट करने दीजिए, फिर पानी पिलाइए, क्योंकि पानी नहीं पिएंगे तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो हमें ये बात समझना पड़ेगा, हमें हाइड्रेट करना है। 20 to 24 आवर्स में ऐसा एक भी पेशेंट मेरे को नहीं मिला 15,000 में। हमारे पास तकरीबन 15,000 लोग आए थे, यहां वहां से, ऑनलाइन, ये सब लेके। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिला जिसको 24 घंटे से ज्यादा फीवर रहा हो, अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हो। सो वी कैन वेरी वेल से दैट दिस इज अ रूल, यू कैन डू दैट एंड सी फॉर योरसेल्फ। कभी भी नेक्स्ट टाइम फीवर हो, ट्राई। नेक्स्ट डे क्या करना है? नेक्स्ट डे बॉडी क्या करेगी? बॉडी टेम्परेचर तभी कम करेगी जब एक एक वायरस मर जाएगा। बॉडी विल लोअर द टेम्परेचर ऑटोमेटिकली। There is a divine body. I just proved it to you. नहीं? So the body knows exactly करना क्या है। So जैसे टेम्परेचर कम होगा, बॉडी विल लोअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? जिस वायरस ने अंदर घुस के कुछ ना कुछ सेल्स को डैमेज किया होगा, उस सेल को मारना है। It is the duty of the body to kill that cell which is affected by the virus or the bacteria. What tool does the body have? The body does not have an AK-47. It will lower oxygen concentration so that the affected cell should die. और हमने क्या किया? ऑक्सीजन दे दिया। Are we helping the body or harming the body? We did exactly opposite to what was supposed to be done. But fortunately, I was very strong on my convictions. The whole world was saying this, I was saying that. And I was very strong, and every day we used to save patients.
आप देखिए सेकेंड डे द बॉडी विल लोअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. पहली बात तो वी आर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम ऑफ अनलर्न विद डॉक्टर पांडे. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू अनलर्न. You have learned many things. There are so many things that we need to unlearn. Like for example, if I ask you, anybody, what do we take in and what do we breathe out? What do we breathe in and what do we breathe out? Anybody? What do we breathe in, sir? Oxygen. Huh? And we breathe out carbon dioxide. Wrong. 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 We breathe in air. We don't breathe in oxygen, please. You have to unlearn this. You breathe in air. Air has got 20% oxygen. Oxygen favors combustion. Oxygen आग लगाती है. Am I not right? 7th स्टैंडर्ड में जब आपने पढ़ा था ऑक्सीजन के बारे में, तो आपने यही पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन आग लगाती है. जहां भी आग बुझाना है ऑक्सीजन सप्लाई काट दीजिए, आग बुझ जाएगी. इसका मतलब है ना कि ऑक्सीजन आग लगाती है. आप ऑक्सीजन दे रहे हैं और इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि सीआरपी बढ़ रहा है. इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है? आग लगाइए. आप हवा देते तो आग नहीं लगती, क्योंकि इस बॉडी को द डिवाइन बॉडी एक्चुअली नोज कितना ऑक्सीजन निकालना है, कितना नहीं निकालना है. जितना नहीं निकालना है दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. सो विच इज व्हाई वी नीड टू अनलर्न मेनी थिंग्स टू लर्न न्यू थिंग्स. सो द सेकेंड डे द बॉडी विल लोअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. यू गिव इन मोर एयर. 99% लोग पेट के बल लेट के सांस ले सकते हैं. Only 1% people who have got a fracture or something like that, वो नहीं ले सकते. उनको एयर दीजिए, ऑक्सीजन नहीं. That is exactly what we did. First day only water. Second day this 5 liters water will be there. Apart from that, we gave vitamin C fruits and we kept them in sunlight for 2 hours. Vitamin D के लिए. So first day, water only, sunlight, only water. You can give nimbu pani, but not nariyal pani. Nariyal pani is food. It's not water, please. It's food. First day नहीं देना है. Second day, you can give nariyal pani. You can give all kinds of water, not juice. जब तक दांत है तब तक जूस नहीं. फ्रूट. दांत क्यों है? फ्रूट के लिए नहीं. कौन इतना ये दबाएगा? रिमेंबर, जूस इज अ प्रोसेस्ड फूड. यू हैव प्रोसेस्ड इट. शुगर केन जूस से डायबिटीज होता है. शुगर केन चू करने से डायबिटीज नहीं होता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. शुगर केन जूस इज अ प्रोसेस्ड फूड. So you need to understand what is processed food. If you are processing that food which is available in a real form, if you can take it, take it. If you can't take it, it's not meant for you. It's not meant for you. So if a person who does not have teeth thinks that no, मैं तो juice पी के ठीक कर लूँगा, it is going to harm you. So you have to go according to the flow. जो आपका प्रॉब्लम है उसके हिसाब से जाना जरूरी है. And don't go on it. We don't treat diseases, we treat a patient. Because diabetes 18 साल के बच्चे को भी होता है, 80 साल के भी होता है. We don't treat diabetes, we treat those patients ताकि उनको शुगर खत्म हो जाए. And it is important not to treat a disease, it's important to treat the patient. Disease तो treat करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग lectures देंगे आपको. We treat an individual patient and make him absolutely normal. That is what we do. So, second day, all kinds of fruits, 2 hours sunlight and 5 liters of water continuing. Third day, no cooked food. Up till now, no cooked food, because cooked food
will add to your inflammation burden. We don't want a cytokine storm here. Third day the patient says, नहीं डॉक्टर साहब कुछ तो नमकीन खाने का मन कर रहा है, क्या करें, थोड़ा नमक. So 12 o'clock we give him khichdi, and throughout the day fruits, salads and नारियल पानी if required, normal पानी, हल्दी पानी, नींबू पानी, all kinds of water. Fourth day the person will be jogging. No more COVID. COVID is a very small disease. I mean, you should not be worrying so much about it. During COVID times, number one, I never wore a mask, but don't quote me. And we hugged these patients. We never maintained any distance. Distance means तुम्हारे को डर है, डिजीज से कभी डरना नहीं. You have to know the trick how to cure a disease. And our aim is to empower the world. Why? Because if you see my videos on YouTube, we always say, एक आदमी ठीक होगा वो 2 आदमी को और ठीक करेगा. हम पूरे भारत को स्वस्थ करने निकले हैं. पूरे भारत को एक अकेला मैं कैसे स्वस्थ कर पाऊंगा? तो जो लोग, जैसे मैं आपको टच कर रहा हूं, आप 2 लोगों को और ठीक करें. आई विल एम्पावर यू टू बिकम योर ओन डॉक्टर. नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर लीजिए. जो मेजर डिजीजेज है 98-99% वी हैव मेड वीडियोस ऑन दैट. आप उसको देख लीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि क्या डिजीज प्रोसेस है. आप अपना भी ठीक कर लीजिए, दुनिया का भी ठीक करिए. नो नीड टू सेंड टू मी, यू क्योर द वर्ल्ड. वी वांट अ बेटर एंड अ हेल्दी वर्ल्ड. हेल्दी बॉडी gives a healthy mind. Healthy mind will help the nation grow. And हम भारतीय हैं, देशभक्त हैं. पूरी दुनिया पेट्रियोटिक हो सकती है, हम देशभक्त हैं. There is a difference between patriotism and देशभक्ति. Patriotism is an ism. ये भीड़ का उन्माद भी हो सकती है, जैसे हिटलर के साथ कि भीड़ का उन्माद, इट कैन कॉज वायलेंस. देशभक्ति दैट मीन्स आप भाग हो गए. देश हमारे रग रग में बहता है. देशभक्ति उसको कहते हैं. हम कहीं भी रहें, भारतीयों का सबसे पहली चीज ये है, भारतीय कहीं भी हैं दुनिया में, भारत उनके दिल में रहता है. ये हमने और कहीं किसी देश के इंसान के साथ देखा ही नहीं. मैं कई देशों में गया हूं, कई लोगों से मिला हूं. ये फीलिंग अगर किसी के पास है, यकीन करके चलिए वो भारतीय हो. ये भारतीय ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. इज व्हाट आई फील. एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दिस. सो आर यू क्लियर अबाउट कोविड नाउ? Now why are we wearing a mask? I want to know. I can see a few people wearing a mask. Mask आप क्यों पहने हैं? Because you want to prevent COVID from entering you. Are you actually doing that? Let's talk science now. COVID virus is 10 to the power minus 12 microns. The best mask in the world is 10 to the power minus 3 to minus 4 microns. कोविड के लिए आपका मास्क फुटबॉल ग्राउंड है. उस वायरस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. आप मास्क पहने हैं नहीं पहने हैं, कोई फर्क ही नहीं. नंबर 1, ये एक साइंटिफिक क्वेरी है. आई वॉन्ट एनीबडी हु इज गिविंग अ डिक्टम कि आपको मास्क पहनना जरूरी है, मुझे बताइए, मुझे साइंटिफिकली बताइए प्लीज. कैसे? मुझे साइंटिफिकली समझा. मैं एक साइंटिफिक आदमी, मुझे साइंटिफिकली समझा दिए, मैं समझ जाऊं. बट आई नीड अ साइंटिफिक आंसर. नंबर 2 इज, जो आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, अगर आपने मास्क पहना है, अगर आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपके ब्रेथ में कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर में ज़्यादा है. अगर आप वही एयर वापस ब्रीद इन कर रहे हैं, आप खुद ऑक्सीजन की कमी झेल रहे हैं. आप देखेंगे अगर आप मास्क पहने बहुत जल्दी थक जाते हैं.
मास्क उतार देंगे, आप बहुत अच्छा से सांस ले सकते हैं, थकेंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और डरिए मत प्लीज, सबसे पहले तो डरना बंद करिए। कैंसर हो गया, मेरे ख्याल से कैंसर हो भी गया है, तो भी डरना बंद करिए। उसके लिए करना क्या है वो जानना जरूरी, और वो आप कर लीजिए। आप देखिए, हम लोग एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई शुड नॉट बी बोस्टिंग, लेकिन कैंसर्स को पूरी दुनिया लगी हुई है, कैंसर को रोकने में पूरी दुनिया लगी हुई है। बहुत से मुझे यहाँ पे भी दिखते हैं, जसलोक हॉस्पिटल, कोकिला बेन हॉस्पिटल, यहाँ से टेस्ट करा के आए, वहाँ से टेस्ट करा के आए, पेट सिटीज। मैं पेट सिटी खुद ही करता हूँ, सिंस आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट, मैं ये सब खुद ही करता हूँ। लेकिन पेट सिटी भी करा रहे हैं, कैंसर रुक नहीं रहा है। ट्रांसिएंटली 2-3 महीने के लिए कोई कीमोथेरेपी दिया, कोई कैंसर ये हो गया, पेशेंट बड़ी खुश हो गया, 6 महीने बाद वापस आ गया। पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस डिजीज इज एंड हाउ टू क्योर इट। इसलिए कोई भी डिजीज को देखने का एंगल, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों एंगल से देखना पड़ेगा। जब तक आप नहीं देखेंगे ये डिजीज ठीक नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग सिर्फ दैहिक डिजीज को देख रहे हैं, दैविक और आध्यात्मिक पहलू उसका देख ही नहीं रहे। जब तक आप नहीं देखेंगे, और आपका ट्रीटमेंट ये तीनों पहलू से आना पड़ेगा एक साथ, तभी जाके त्रिशूल का वार होगा। नहीं तो सिर्फ एक ही अगर पोक करते रहेंगे तो दूसरे से निकल जाएगा, जिसको हम नया नाम देंगे मेटास्टेसिस। सो स्टार्टिंग अ लेक्चर टुडे, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हिपोक्रेटिस, जिसका ओथ लेते हैं लोग डॉक्टर बनने के लिए, यू टेक अ हिपोक्रेटिस ओथ। सो हिपोक्रेटिस का पंच लाइन था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। उस समय तो 300 BC में पैरास्टामोल की कंपनीज नहीं थी, एंटीबायोटिक की कंपनीज तो थी नहीं, और हिपोक्रेटिस was known to cure anybody who came to him. That is why he is called father of modern medicine. तो उस समय कौन सा मेडिसिन यूज करते होंगे, और उनका रिकॉर्ड है, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जिसको वो क्योर नहीं किया। तो कहां से वो नॉलेज कहां से आया? अन्न ब्रह्म है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। हम भारतीय हैं, नदियों को मां कहते हैं, क्यों? अन्न ब्रह्म है, उस ब्रह्म का पोषक नदियां हैं, इसलिए वो मां है। आपकी पोषक आपकी मां है, उस ब्रह्म की पोषक नदियां हैं, इसलिए वो मां है। ये हमें लर्न करना पड़ेगा, बहुत सी चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी। सो स्टार्टिंग विद दिस, E is equal to mc square. I'm sure many people know about it. Right? How many people don't know about it? E is equal to mc square. You don't know about it? Never heard? This is Einstein's equation, and this actually changed the world. आप आज अगर मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं, बिकॉज E is equal to mc square. ये किसी ने आपको समझाया नहीं, मैं आपको समझाता हूं। E is equal to mc square. That means energy and mass have come on the same platform. So this is a mass. This has got mass, suppose 10 grams. If you give it the c square force, it will convert into energy. And if this energy is cooled down, it will turn into mass. You got my point? So it is possible to change form. It is possible to change form. मैं कुछ और बोल रहा हूं। और क्रिश्चियनिटी का बॉटम लाइन है रिसरेक्शन। Many people feel, how is resurrection possible? It is possible because E is equal to mc square. You can prove it today by science that resurrection is possible. One form changes to another. जो लोग सनातन जानते हैं,
वो कैसे देखते हैं? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे. कैसे? How are we changing forms? Because E is equal to mc square. So you should know how to coordinate science with spirituality. Unless you coordinate that, healing will not happen. Let me tell you. इसीलिए आप हमारे प्रेस्क्रिप्शंस पे सबसे ऊपर देखेंगे, इन्वोक द डिवाइन. बिफोर यू डू एनीथिंग, इन्वोक द डिवाइन. टेक डिवाइन ब्लेसिंग्स. Unless you invoke the divine, so many things in life will not happen to you. And once you start invoking the divine, you will see so many things changing, so many. Or I am a scientific person. I will never say anything which I cannot prove by science. So if you have any or many questions, please ask me. I will surely tell you how to do it. Nonetheless, so we start with next slide. Yes, so there are so many things that you can see here. वो क्या है? बादाम है ना, राइट साइड में. बादाम में can you see those striations where I put an arrow? Doesn't it look like arteries जो हार्ट में चलती हैं, जो ब्लॉक हो जाती है? Doesn't it look like that? बादाम को हमने क्या किया? भिंगा दिया. Any seed needs to be charged. Seed is a packet of potential energy. You cannot take it just like that. You have to charge it with water. बादाम को आपने भिंगा दिया. So last, yeah. So you see those striations, and they are red in color. This is nature's signature. Nature is trying to tell you कि अगर आर्टरी ब्लॉक है तो बादाम खाओ. ब्रेन जैसा दिखता है वैसा अखरोट दिखता है. दैट इज नेचर सिग्नेचर. नेचर इज ट्राइंग टू टेल यू ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है, अखरोट खाओ. व्हाट डिड यू थिंक? नेचर विल कॉल यू अप एंड टेल यू? फोन करेंगे आपको, आपका नंबर भी नहीं होगा. सो हाउ विल नेचर टेल यू? दिमाग भी है आपको. Use it, please. And these are nature's signature. So why can't food be your medicine? Suppose अगर tumor हो गया, suppose somebody has tumor and they feel that no, my son was saying that surgery करना जरूरी है, उसको निकालना जरूरी है. बहुत सी बात है, निकालना जरूरी है. लेकिन क्या सर्जरी ही एक ऑप्शन है? क्या और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है ना? There are angiolytic foods. ऐसे फूड्स हैं जिनको दिया जाए वो एंजियोलाइसिस कॉज कर देते हैं. वो एक टेम्पोररी सर्जरी का काम करते हैं. There are angiogenic foods. बाईपास क्यों कराना है? ब्लड सप्लाई बढ़ाना है. आप फूड लेके ब्लड सप्लाई क्यों नहीं बढ़ा सकते हो? एंजियोजेनेसिस होगा. एंजियोजेनेसिस इज न्यू आर्टरीज आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दैट फूड एंड द ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस देयर. So why can't food be your medicine? If food is your medicine, trust me, you won't require any medicines. So learn to know how food is your medicine. So now that you will see our prescriptions, they are full of what you should do, what you should eat, when you should eat, how much you should eat, and all those things are given there because we sincerely feel let food be thy medicine. And this food actually knows everything in this world. If you are deep into spirituality, you will know that everything that is living, whether it is plant, animal, everything, they have got special powers. The food that you are eating has got special powers. If you are invoking the divine before eating that food is going to positively affect you. Otherwise, it might not affect you. So much difference. I'll give you an example. You can try it at home.
Many times when you have abhimantrit jal, if you go to a temple, they will give you some jal to take. Abhimantrit jal, that's called. That is very sweet to taste. They don't add any sugar or anything. उसमें प्रेयर्स होते हैं, मंत्र होता है उसमें, वो मंत्र पढ़ते हैं. And it is a scientific fact that water crystals change form. As soon as you give vibrations, positive vibrations to it, they change form. They change to good crystalline healing structures, and crystals heal. I'm sure you know that. Crystals heal. So this water is changes its crystalline form by just prayers. So why can't you pray before you eat or drink anything? आप देखिए, I'll give you another example. The best antiseptic, the best antibiotic, the best anti-cancerous medicine that I know is haldi. You prove it to me that haldi is not the best antiseptic. You prove it to me that haldi is not the best antibiotic or best anti-cancerous. You prove it to me. So this, when I say to the lobby of doctors, they start searching for evidences. You go on. You can't prove it to me. Because the day you start disproving it, you will understand that you have proved that haldi is much better. So they don't even try it. Anyway, so that is the best. But who decides what action haldi will take when it goes inside? Whether it will behave as an antiseptic or an antibiotic or an anti-cancerous, who decides? It is not you. It is the haldi that decides. That is why it is a quantum food. It is divine food. All foods are quantum. उसको प्रेयर करिए लेने के पहले. Invoke the divine before you have any food inside. And you will see the difference it makes to you. The difference you will see from next day onwards. आप आज करना शुरू करिए, आप कल से difference देखेंगे. अब देखिए, अगर आप constipated हैं, आपके motions normal हो जाएंगे. You can't imagine what this is going to do to you. So next slide, please. Yes, the digestive system. This is the key. So how many people know about the immune system? How many people have not heard about the immune system? So there is nobody who has not heard. Okay, so can you tell me where the immune system is? Where is it? You can't hear. You can't hear. Okay, so where is the immune system located in the body? Yeah. So 80% of your immune system is in the gut. 10% is on your outer coverings, outer skin, and 10% is on the inner coverings, inner skin. This is 100% of the immune system that you have. So 80% is in the gut. And antigen antibody reaction, आपने सुना होगा, immune system की जब भी बात होती है, there is an antigen and antibody reaction. This forms an antigen antibody complex. Now, if this forms in the gut, if it gets deposited in the thyroid, you get Hashimoto's thyroiditis causing hypothyroidism. If this gets deposited in the joint, you get rheumatoid arthritis. If it gets deposited in the brain, you get multiple sclerosis. If it gets deposited in the lungs, you get bronchial asthma. The problem was not in the lungs, not in the brain, not in the joints, not in the thyroid. The problem was in the gut. So we cure the gut so that autoimmune diseases get cured automatically. आप उसका नए नए नाम दे सकते हैं. अर्टिकेरिया है मुझे,
मुझे तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है. All these are names. You come to the basics. Basics is the gut is diseased. Treat the gut, the effect will go. Because what is the world doing? The world is treating the thyroid. Thyroid is not diseased. This antigen antibody complex came from the gut and got deposited in the thyroid, and you are treating the thyroid. It's not diseased, and neither will this produce a cure if you are treating it. So, if you really want to cure it, cure the gut. That is why the understanding of the digestive system is very important. Which is why many times you will not get many things in big textbooks. You have to go deeper down, deeper down. Like, for example, while I am doing my PhD on the pineal gland, I studied the Bible. The Bible has Matthew 6.22, if you want to note down. In Matthew 6.22, you will get, if the eye be single, the body is full of light. Can anybody जिनकी पूजा पद्धति Christianity हो, can anybody tell me the meaning of it? How many Christians are there? So I would want somebody to tell me the meaning of this. Matthew 6.22. If you have a phone, you can type it there. Matthew 6.22. If thine eye be single, thy body will be full of light. What does it mean? So this is the third eye that is being talked about. If you open your third eye, your body will be full of light, like how Jesus was. His body was full of light. Whenever you see him, you will feel that he is divine. He has got divine things coming. Because his pineal gland was open, and so was जितने भी आपको देवी देवता मालूम है, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो राम हो, सभी के, you will see a halo behind the back. That halo is the divine light that comes once your pineal gland is active. This is the wisdom eye, the eye of wisdom. That is why it is said, if thine eye be single, body is full of light. And that is why we have named our wellness center as the third eye. And we are starting a branch with Jonita here, the third eye, and Jonita will be the contact person here, and she will definitely guide. She is already doing a marvelous job by employing people who are handicapped. They don't have eyes. So we'll also try to work on the third eye of the people who don't have two eyes. If we work on the third eye, their blindness will go. So we are working on that, and we will definitely be doing something about it. But in the meantime, we will be starting something like this, and we'll be very happy to work with Jonita. She's doing an excellent job, and she has been doing this for a very long time. It is just that we have not recognized it. What work she's doing, she needs a lot of salute from everybody. So she's doing something very divine, and we don't have any issue. If somebody is doing divine work, we are there. We are there with folded hands, karbadh. We are there to help and promote anything that is having divinity inside. And she is definitely doing it, not for her personal gains, definitely not. Definitely not. It is for the happiness that she gets out of giving. Happiness will never be on receiving, it will always be in giving. So that is why if you give, you will be happy. If you receive more, you will be sad. इसलिए ज़्यादा पैसे जिनके पास होते हैं ना, sad होते हैं, बहुत happy नहीं होते.
जिनके पास कम पैसे होते हैं, जो ज़्यादा देने में अविश्वास करते हैं, दे आर हैप्पी। और हम लोग सनातन में भी जब पैर छूते हैं तो आशीर्वाद क्या मिलता है? खुश रहो, हैप्पीनेस। देयर कैनॉट बी, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। So, the digestive tract for you. Let's go to the next slide, please. Yes. So, food. There are lot of queries. What kind of food? Cooked food, uncooked food. I want to ask you. Last time, when did you see deer making palak paneer? When did you see? Deers don't get blood pressure also. They don't get diabetes also. They don't get hypertension or cancer also. Because they don't eat palak. We need to get this straight. None of the species on planet Earth cook their food. Man cannot be the only intelligent species on planet Earth. When you gave yourself the certificate of the most intelligent species on planet Earth, did you ask any other species before you gave this certificate to yourself? आज एक कुत्ते के सामने खाना रख दीजिए, वो एक बार सूंघ के आपको बता देगा खाना है कि नहीं खाना है। आपको आज तक नहीं पता चला क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और आप सोचते हो आप सबसे इंटेलिजेंट स्पीशी हो। थिंक अगेन, थिंक अगेन। 2004 में 2003 में सुनामी आया, कितने जानवर मरे थे? एक भी नहीं, एक भी नहीं, सब पहाड़ पे भाग गए। कौन मरा था? हम मर गए। हम तो बड़े पढ़े लिखे सेंट जॉन्स में पढ़े हुए लोग हैं, हम तो ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ जानते हैं। उस कुत्ते ने तो कहीं नहीं पढ़ा हो, उसको पता चल गया सुनामी आ रहा है। हमें इतना पढ़ने लिखने के बाद हम अपने आप इतना साइंटिफिक समझते हैं, इसीलिए मेनी टाइम्स द ह्यूब्रिस ऑफ मैनकाइंड हैज टू कम डाउन। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न, so many things that we need to learn from nature, and definitely you are not the most intelligent species on planet Earth. Definitely not. Definitely not. So there are many more examples. I can go on and on and on, but let's stop here and tell me. So none of the species have eat cooked food. So why are you eating? You are eating for taste. Good. टेस्ट जिंदगी में होना ही चाहिए, लेकिन टेस्ट ही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। टेस्ट तो होना ही चाहिए, टेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। सो हैव यू एवर थॉट दैट वी ईट सीड्स? हम सीड्स खाते हैं। चावल क्या है? चावल सीड है ना। दाल क्या है? सीड है ना। रोटी क्या है? सीड है ना। वी ईट सीड्स, राइट? इफ यू बर्न अ सीड और इफ यू बॉयल a seed can become a tree. It has a full blueprint to become a tree. If you boil a seed और उसको आप वापस जमीन में गाड़ देंगे तो पेड़ हो जाएगा। क्यों? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। It's dead food. So how is dead food giving you life? I want to know that science. I want to know that science. I yet do not know that science. How is dead food giving you life? Dead food will give you death. Live foods will give you life. Let's make it a bottom line so that 50% of your diet should be uncooked raw food. जिस खाने में ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी है, जिस खाने में इंसान की आग लगी है वो अच्छी नहीं है। जब तक हमें ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक हमें लगेगा ये फूड अच्छा नहीं है,
अमेरिका में शोध हुआ है ये वाला फूड ज्यादा अच्छा है, वो फूड ज्यादा है, एंड फूड इंडस्ट्री वो आपको पहेलियां बुझाती रहेगी उम्र भर। आप पहेलियां पूछते रहो, उनका प्रोडक्ट खरीदते रहो, मरते रहो। आप जब इमरजेंसी में जाओगे, इमरजेंसी में आपकी जान बचा लेंगे ताकि आप और कुछ दिन जिंदा रहो, एटीएम यूज करते ही रहो और खरीदो और मरो। Unless we understand this, we need to understand bottom line of things. So what is the bottom line? 50% of your food, whatever you eat, should be uncooked food. 50% can be cooked for taste. Don't expect health from any cooked food. अब रही प्रोटीन की बात, because I can see there might be some gym goers here. प्रोटीन की बात रही. Since I'm a radiologist, so these guys keep on coming to me, youngsters, 18, 20-year-old, 25-year-old, going to the gym, taking so many proteins. They have come with kidney failures. Kidney bears the brunt of any protein that you take. The brunt is borne by the kidneys. आप सुबह से शाम तक पता नहीं हमें कितना प्रोटीन खाना है, बिस्किट वाला प्रोटीन, हमें दाल में प्रोटीन चाहिए, हमें रोटी में प्रोटीन चाहिए, हमें चावल में प्रोटीन चाहिए, हमें सब्जी में प्रोटीन चाहिए, सोया में चाहिए, हमें पता नहीं क्या क्या, चिकन चाहिए, मटन चाहिए। आप खाओ मरो, जब तक आपको ये बात नहीं समझ में आएगी इतना प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं। You know what is the requirement of a protein? This is especially for gym goers. They should know. 0.8 gram per kg body weight per day. Comes to how much? If your weight is 60 kg, you require 48 grams of protein. 48 grams एक हैंडफुल चने में आ जाते हैं। अगर अंकुरित चना हो, एक मुट्ठी आप उठा लें, उसमें 48 ग्राम्स हैं। इतना ही प्रोटीन चाहिए, इतना ही प्रोटीन चाहिए बॉस। अगर इससे ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं आप, यू विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू यू। दूसरी मिथ विच जिम पीपल डू नॉट नो इज मसल बिल्डिंग प्रोटीन से होता है। दे कैरी दिस मिथ, मसल बिल्डिंग इज ऑलवेज बाय कार्बोहाइड्रेट। दिस इज साइंस। बाकी सब नॉन साइंस है, जिसको नॉनसेंस कहते हैं। नॉनसेंस वर्ड हैज कम फ्रॉम नॉन साइंस। तो मसल बिल्डिंग, द बिल्डिंग ब्लॉक is a protein that is always there in the body. It is like this. प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। आपने फव्वारा देखा होगा, ये कोलाबा में फव्वारा है ना, फाउंटेन। तो फाउंटेन जहां है 20,000 लीटर्स पानी से फाउंटेन बन जाता है। पीपल हु हैव मेड फाउंटेन्स दे नो। तो क्या रोज 20,000 लीटर्स डालते हैं क्या उसमें रोज 20,000 लीटर्स डालते हैं? कितना डालते हैं? जो इवापोरेट कर गया, जो स्पिल आउट कर गया, इतना ही डालते हैं ना। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बॉडी में एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। आपको रोज इतना डालने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज प्रोटीन। जो बॉडी में डिसइंटीग्रेट हो रहा है वो प्रोटीन पूल में जा रहा है, वही बॉडी फिर से रिसाइकिल करके बना रही है। आपको बाहर से इतने प्रोटीन्स चाहिए। इफ यू आर टेकिंग बिवेयर, देयर विल बी किडनी फेलियर। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो अफ्रीका चले जाइए। 54 कंट्रीज इन अफ्रीका। आप इसमें से एक भी कंट्री का स्लोगन देख लीजिए जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन में क्या बोलते हैं? मैं डायलिसिस फ्री कर दूंगा। इफ आई बिकम प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, मैं डायलिसिस फ्री कर दूंगा। व्हाट डज दैट मीन? दैट 70% ऑफ द पेशेंट्स आर ऑन डायलिसिस। They are into totally non-vegetarian food, totally proteins.
सो अफ्रीका का बेसिक प्रॉब्लम क्या है? इधर मलेरिया और किडनी फेलियर। वो क्यों है? इतना प्रोटीन खा के। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हम जब तक ये समझेंगे नहीं, तब तक ये लेक्चर के बाहर जाके आप वही करेंगे जो आप कल तक कर रहे थे। आई वॉन्ट दिस लेक्चर टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल, ताकि आप ये बात समझें एंड आस्क मी पर्टिनेंट क्वेश्चंस so that you are clear in your mind once you go back home what to eat, what not to eat, how much to eat, how to remain healthy. जब तक आपको ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक, और जो लोग इस चक्कर में भी हैं हम तो डोले शोले बनाइए, अच्छी बात है, वो आप कार्बोहाइड्रेट से भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अनस्क्रूपुलस मीन्स से आप अगर बनाएंगे तो चेहरा सिकुड़ जाता है। आप देखेंगे जो लोग जिम जाते हैं उनके फेस को देख के बहुत अजीब सा दिखता है। उनके फेस में वो बबलीनेस, वो चाइल्डिशनेस रहता नहीं। क्यों? प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल, नंबर 1। नंबर 2, I will show you. Like there are gym goers here, they will understand. Gym trainers here. यहां से लेके यहां तक कितने मसल्स हैं? 16। यहां से लेके वहां तक पैर में कितने मसल्स हैं? 22। एब्स में कितने मसल्स हैं? 8। बैक में कितने मसल्स हैं? 8। इतना ही एक्सरसाइज करते हैं आप। आई रिपीट, इतना ही मसल्स एक्सरसाइज करते हैं आप, इज़न्ट इट? फेस पे कितने हैं? 43 मसल्स ऑन द फेस। इफ यू डोंट एक्सरसाइज योर फेस, झूल जाएगा, यू स्टार्ट लुकिंग ओल्ड। डोले शोले बना के कुछ नहीं होगा। अगर डोले शोले बना रहे हो तो बनाओ, फेस का भी ध्यान रखो। कैसे ध्यान रखेंगे? The only way you can exercise these 43 muscles is the first by a smile, the second is by chewing. You have to chew. आप खाना तो पका लेते हो, उसको जीभ पे रख के पानी लेके पी जाते हो, आप चू तो करते ही नहीं। अगर आप अनकुक्ड फूड खाते तो इसको चू करते। अगर आप कहीं विलेज एरिया में रहते तो दातुन करते, चू करते आप। थैंक गॉड कोकोनट है, बिकॉज इंसान का बस चले तो बंदे का भी जूस बना दे। फ्रूट का तो जूस बनाते ही है, कोकोनट इज द ओनली फ्रूट जिसको तुमको खाना पड़ेगा, जूस नहीं बना सकते उसका भी चटनी बना के खाते। मतलब इंसान को एक चीज, एक मशीन मिल गई, वो सब चीज का जूस बनाने के चक्कर में पड़ जाता है। तो चू, जब तक आप चू नहीं करोगे ये मसल्स टाइटन नहीं होंगे एंड यू स्टार्ट लुकिंग ओल्ड। तो यूथ अगर दिखना है तो चू करना शुरू करिए। अगर कुछ नहीं है तो एक दातुन तोड़ लीजिए और उसको चू करिए, उससे ब्रश मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिपीट, उससे ब्रश मत करिए, दैट विल इंजर योर गम्स, दैट विल कॉज द सेम प्रॉब्लम व्हाट योर टूथब्रश इज कॉजिंग यू। टूथब्रश 1900 में आया, राइट? टूथब्रश 1900 में आया। 1900 के पहले के जितने स्कल्स मिले जो 100 साल के थे, उसके 3200 दांत इंटैक्ट थे। क्या ऐसी बात हो गई कि टूथब्रश आने के बाद 50 साल में आपके दांत गिरने लगे? This is a pertinent question that needs to be asked to your dentist. You need to ask this question. क्या ये सही है? Some people might say नहीं, मैं तो 90 years का हूं, मेरे सारे दांत हैं, मैं तो रोज ब्रश करता हूं। It might be an exception. वो रूल नहीं हो सकता है। रूल होना चाहिए कि 3200 दांत आपके इंटैक्ट होने चाहिए। ये रास्ता टूथब्रश का रास्ता नहीं है, क्योंकि टीथ में कुछ नहीं होता है, गम्स में सब कुछ होता है। गम्स होल्ड करते हैं टीथ को।
गम्स को आपने कभी भी स्ट्रांग बनाने की कोशिश नहीं, और गम्स में ब्लड सप्लाई है, उनको पिंक रहना जरूरी है। आपके जितने टॉक्सिन्स हैं, जो भी आप जूस पी रहे हैं, आप यू आर बाइटिंग ऑन टू एसिड, और एसिड बेस बैलेंस का चलते चलते बात कर ले बिफोर वी वेट फॉर क्वेश्चन आंसर्स एंड क्लोजिंग द सेशन इज दिस बॉडी is in an acid base balance or disbalance। अगर पूरी जिंदगी को एक बॉन्साई बना के एक दिन बना लिया जाए, मतलब आपका कोई 50 ईयर ओल्ड है, कोई 60 ईयर ओल्ड है, कोई 20 ईयर ओल्ड है, अगर पूरी लाइफ को एक दिन में ला दिया जाए, एक दिन, वन डे लाइफ, तो क्या होगा? जब आप सुबह सो के उठे, जिंदगी शुरू हुई, शाम को सो गए, मर गए, यही है ना, इतना ही है ना। तो सुबह जब से आप उठते हैं और शाम को जब तक सो नहीं जाते हैं, आप जो भी करते हैं आप एसिड बनाते हैं। कभी आपने देखा? अगर कोई थॉट भी आता है वो एसिड बनाता है। इफ यू ईट एनीथिंग, गैस्ट्रिक एसिड बनता है। इफ यू एक्सरसाइज, लैक्टिक एसिड बनता है। दिन भर बॉडी एसिड बनाती है, और दिन भर ये बॉडी उस एसिड को बैलेंस करने के चक्कर में रहती है, उसको बॉडी से निकालने के चक्कर में रहती है। बॉडी से निकालने के 4 ही तरीके हैं: रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। यही 4 तरीके हैं बॉडी के पास, 5वां कोई तरीका नहीं है। सो आई रिपीट, रेस्पिरेशन, अगर आप लंबा सांस ले रहे हैं, लंबा सांस छोड़ रहे हैं, अल्कलाइन ब्रीदिंग है वो। अगर आप हल्का हल्का सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एसिडिक ब्रीदिंग है, एसिड बना रहे हैं। इसीलिए प्राणायाम से हेल्थ अच्छा होता है, बिकॉज यू ब्रीद इन मोर डीपली, यू ब्रीद आउट, यू टर्न योर बॉडी अल्कलाइन। रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यार ये हॉल ठीक नहीं है यार, इसमें एसी होना चाहिए। आपने पसीना रोक लिया, एसिड निकलना बंद हो गया। यूरिनेशन, ज्यादा पानी पी नहीं रहे हैं, यूरिन कर नहीं रहे हैं, एसिड बिल्डअप हो रहा है बॉडी में। डिफेकेशन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन है, निकल नहीं रहा है, तो एसिड बिल्डअप हो रहा है। बॉडी कुछ टाइम तक सहती है, कुछ टाइम तक टॉलरेट करती है, कुछ टाइम तक टॉलरेट करते 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 एक टाइम आता है जब बॉडी का टॉलरेंस लिमिट खत्म हो जाता है। उसके बाद बॉडी क्या करती है? उस एसिड को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं भेजती है। अगर गॉल ब्लैडर में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, अगर किडनी में भेज दिया तो वहां स्टोन बन गया, अगर ब्रेस्ट में भेज दिया तो वहां लंप बन गया, उस लंप में ब्लड सप्लाई चालू हो गया तो कैंसर बन गया। So we need to understand that we need to maintain our acid base balance। अगर मैं आपसे चिढ़ता हूं, सपोज इसमें दैविक आध्यात्मिक स्वरूप दिखाता हूं आपको। अगर मैं जोनिता से चिढ़ता हूं, मैं एक जेंटलमैन हूं, मैं शायद फिजिकली उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मेंटली दैट वॉर इज गोइंग ऑन, मेरा एसिड बिल्डअप हो रहा है, my acids are not getting neutralized। ये एसिड बिल्डअप will manifest in a disease process। या तो स्टोन होगा, या गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा, किडनी में स्टोन होगा, या कोई ट्यूमर हो जाएगा। इसको बोलते हैं दिमाग को ठीक रखना। So which is why this body that you see is a physical body। इसको संस्कृत में अन्नमय कोश कहते हैं। आपने अन्न से, एक सेल से इतना बड़ा बॉडी बनाया है। वो एक सेल से शुरू हुआ था आपकी माँ की पेट में, जाइगोट कहते हैं उसको। वहां से मल्टीप्लाई हो के आप बने हैं और अन्न से बने हैं, इसीलिए ये अन्नमय कोश है। इसको चलाता है प्राणमय कोश, उसको चलाता है मनोमय कोश, उसको चलाता है विज्ञानमय कोश, और अंत में है आनंदमय कोश। तो मनोमय कोश में सारी विकृतियां पलती हैं। अगर मैं उससे जेलस हूं, उस
उसको लाइक नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ यार वो मेरा दुश्मन है, दैट मीन्स मैं अपना मनोमय कोश खराब कर रहा हूँ। अपना मनोमय कोश ठीक करिए। आप गेट अलाइंड टू द डिविनिटी दैट इज सेंडिंग यू सो मच। यकीन करके चलिए, आपका हेल्थ बहुत ठीक रहेगा, और हेल्थ ठीक रहा तो वेल्थ आदमी कभी भी कमा लेता है। लेकिन अगर हेल्थ ठीक नहीं रहा तो वेल्थ जो कमाया है उड़ जाएगा। सो इट डज नॉट मैटर कि आपने कितना मेहनत किया लाइफ में। स्टीव जॉब्स ने भी बहुत मेहनत किया, एप्पल को कहां से कहां पहुंचा दिया। जितने लोगों का जो सीडी और डीवीडी यूज करते थे उसको खत्म कर दिया स्टीव जॉब्स ने, एप्पल का जो सीईओ था। अल्टीमेटली ही डाइड ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। उस टाइम उसके पास, और उसने बोला था मैं आधा अमेरिका खरीद सकता हूं, आई हैव दैट मच मनी, बट दैट मनी कुड नॉट सेव मी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दीज थिंग्स। पैसे के लिमिटेशंस क्या है? पैसा जरूरी है, लेकिन उसके लिमिटेशंस क्या है ये जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक अंधाधुंध पैसे कमाते जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे इसमें कितने लोगों की आह लगी। इसलिए बहुत सी चीजें हमें ठीक से करनी जरूरी है, सही से चलना जरूरी है, जिसमें आप भी ग्रो करें, दुनिया भी ग्रो करे। जब तक आप पूरी दुनिया को ग्रो नहीं कराएंगे आप खुद ग्रो नहीं होंगे। इट इज लाइक दिस, जब तक आप दूसरों को देंगे नहीं बहुत रिच नहीं बनेंगे। इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े जो रिच लोग हुआ करते थे या जो इतिहास में हैं बहुत बड़े दानी थे। यस सर। Dr. Vijay Chavan. I'm a student of Dr. Pandey. 1 year back, I did 2 courses from him, vibration therapy and kilowatt therapy. He has not covered that topic much because that is not the objective of the today's session. But I'm practicing since 1 year, and effect of that my vibration therapy on myself and my friends, I become energetic till I sleep till 10 o'clock, full of energetic, and I'm possible to do many more things. And I'm doing the further research on endocrine system and spirituality. ये दोनों मुझे combine करने का है, and I need further guidance from you. जरूर। Hello, I'm Dr. Balaji. Practicing ISO. I got from my mom. We're very much practicing training. Myself, I have chronic sinusitis after the second delivery 8 years back, 9 years back. So the Naturopathy and tried go on Naturopathy. I don't believe in Naturopathy per se. मेरे पेशेंट्स एडवाइस मुझे दिया वो हम भी करने में जरूरी है। आपको जनरल प्रैक्टिस में साइंस की आप कुछ बता सकते हैं कि जो मेडिसिन है अपनी फूड। जरूर। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। मेनी पीपल, योर क्वेश्चन विल आंसर मेनी पीपल्स क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। माइग्रेन, thank you for that question. Both the questions will be answered simultaneously और बहुत overlapping questions। साइनस अगर ना हो, मान लीजिए, क्योंकि साइनस जिन लोगों को तंग करता है वो बहुत तंग करता है, उनको लगता है यार पता नहीं काट के ही निकाल दो इसको, सर दर्द मेरा जा ही नहीं रहा है, वो पता नहीं वो आँख की बारी में तो कुछ काम ही नहीं करता, तो साइनस निकाल दो। साइनस क्यों है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। और साइनस जाएगा कैसे? पहली बात यह है, वी डोंट ब्रीथ फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स। हम ज़्यादा बोलते हैं, सुनते कम हैं, जबकि ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, ज़्यादा सुनो, 1 मुंह दिया, कम बोलो। 50% ऑफ द टाइम्स यू शुड बी लिसनिंग, बट वी डोंट। हम बकवासें करते रहते हैं, इसलिए जो ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो मुंह से कर रहे हैं। अगर हम नहीं बोलते तो नाक से ब्रीथ आउट करते हैं, तो वो जो पैसेजेस हैं आप यूज नहीं करोगे तो उसमें पॉलिप भी होंगे, उसमें म्यूकस डाल के ब्लॉक भी हो जाएगा। दैट इज नंबर 1, दैट इज अ मैटर ऑफ नॉलेज। जितने पॉलिप्स होते हैं, जितने ये होते हैं, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। सेकेंड,
जो आप लोगों को लगता है कि नाक कैसे है और वो सीधा लंग्स में जा रहा है। एनाटॉमिकली सिंस वी आर डॉक्टर्स वी नो कि ये ऐसे ऐसे घुमावदार रास्तों से जाता है लंग्स तक कि जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, जितने भी ये है, सब कुछ हट जाए। लेकिन फिर भी हम पोल्यूशन को दोष देते, हम सब कुछ दोष बाहर देते हैं, हम अपने आप को तो दोष नहीं देते। पेशेंट को पूछो तुमको डायबिटीज है, इमीडिएटली ही विल ट्रांसफर द ब्लेम टू हिज पेरेंट। मैं तो फैमिली में है जी, मतलब मैं तो एक निरीह प्राणी ऐसे चल रहा था, इस खानदान में पैदा हो गया, ये सब खानदान का ही दोष है, मेरा तो कोई दोष ही नहीं। हमें एक सेकंड नहीं लगता ये बातें करने में। जबकि डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, आपको इसलिए है कि आपकी जुबान पे लगाम नहीं है। अगर आपकी जुबान पे लगाम हो तो डॉक्टर, पुलिस, वकील, इन तीनों से वास्ता नहीं पड़ेगा। जुबान पे लगाम होना बहुत जरूरी है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मैडम, अगर साइनस है, द बेस्ट थिंग दैट आई नो दैट कैन बी डन इज जल नेति। यू टेक अ लोटा, इफ यू कम टू माई होटल आई विल शो यू, मैं वो लोटा कैरी करता हूँ हमेशा। आप एक तरफ ये लगाएंगे, दूसरी तरफ से जलधार गिरने लगेगा, फिर दूसरी तरफ लगाएंगे, इस तरफ से जलधार गिरने लगेगा। उस बीच मुंह से सांस लीजिए, नाक से नहीं। यू हैव टू नो हाउ टू डू इट। नहीं तो मैं व्हाट आई विल डू इज दैट गिव्स मी अ क्यू कि मैं एक वीडियो बनाऊं इस पे, ताकि आपको पता चले कि करना कैसे। एंड वो 7 दिन आप करिए, आपका साइनस प्रॉब्लम चला 7 डेज एक बार। एंड वाटर का टेम्परेचर कोशिश करिए ठंडा ना हो, ल्यूकवार्म हो, हॉट ना हो, लेकिन ल्यूकवार्म हो। ल्यूकवार्म होगा ना, आपको अच्छा लगेगा, आराम लगेगा। हाँ, अगर पॉलिप्स है तो हम लोग हॉट वाटर देते हैं ताकि पॉलिप्स कट जाए वहां पे। मतलब वी डोंट यूज मेडिसिन, वी यूज साइंस एज मेडिसिन। जैसे, and since you are an eye surgeon you will understand, बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं? 2, 3 होती हैं। वैसे तो 3 होती हैं, 2 को आप किडनी के नाम से जानते हैं, तीसरी स्किन है। तो अगर किडनीज फेल कर गई हैं तो हम क्या कर रहे हैं? स्किन को यूज कर रहे हैं किडनी 2.0, और आपका पसीना निकाल रहे हैं ताकि आपका यूरिन निकल रहा है, और डायलिसिस की जरूरत कम हो रही है या बंद हो रही है। वी आर यूजिंग साइंस एज मेडिसिन। एंड द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन, अगर आपके पास फोन है उसमें लिखिए डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन। डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन इज द साइंस दैट हील्स और क्योर्स और प्रिवेंट्स a disease. That is medicine. Antibiotic medicine नहीं, paracetamol medicine नहीं है. It is a science that prevents or cures a disease is called medicine, and that is exactly what we are doing. Exactly. मैं इसलिए ये बार बार याद करता हूँ कि आजकल आप ये कुछ भी करो, कई बार आपको कोर्ट में खड़ा कर देते हैं लोग, तो ये बोलना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि वी आर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, वी आर यूजिंग साइंस, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। उसमें मेरा कोई दोष नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर आपकी पुकार सुन के कोई नहीं आता है तो अकेला चलो रे, और इसलिए हम अकेले चल रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत भीड़ है साथ। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो माइग्रेन का था, वो भी सिमिलर प्रॉब्लम से जाएगा। आपको है अभी पेन है? अभी किसी को पेन है अभी? मैं उसका पेन 2-3 सेकंड में निकाल के दिखाऊं उसको, उनको विश्वास होगा ना कि कैसे होगा। आइए, तो कमिंग टू दिस, ये एक मेरा वीडियो होगा वेगल स्टिमुलेशन। वेगस नर्व को आप अगर स्टिमुलेट कर देंगे, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी इमीडिएटली दूर हो जाएंगी।
आपको पेन है? माइग्रेन है. I've been having it for the last 30 years. अभी है? अभी है. So this is a live demo. लंबा सांस लीजिए. लंबा सांस. सीधा बैठ. लंबा सांस. लंबा सांस. लंबा सांस लेके रोकिए. छोड़िए. रोकिए. लंबा सांस. लंबा सांस. लंबा सांस लेके रोकिए. लंबा सांस लेके छोड़िए. छोड़ के फिर रोकिए. फिर लंबा सांस लेके रोकिए. लंबा सांस लेके रोकिए. फिर छोड़िए. फिर रोकिए. हाउ आर यू फीलिंग? Better. पेन? Better. कितना पेन गया? I'm feeling much better. I had a migraine, and before the talk I was having a migraine actually, and at least 60% better. आपके साथ कौन है? आपने देख लिया मैंने कैसे किया? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन शी हैज माइग्रेन आई विल शो यू. या तो मैं इसके वीडियोस हैं, यू कैन गो ऑन माय यूट्यूब चैनल, यू विल सी. आप देखिए कोई भी चीज, इफ इट्स एन इमरजेंसी लाइक फॉर एग्जांपल समबडी गेट्स अ हार्ट अटैक हियर, उनको क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा? उनको उठा के खड़ा करूंगा. सो वी हैव टू नो कि कैसे करना है. और ये मैं सबको सिखाना चाहता हूं ताकि आप अपने घर पे हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए. ये किसी को पैरालिसिस अचानक हो गया, क्या करना है? यू हैव टू नो. सो ऑलवेज कीप दिस इन योर पॉकेट. ये क्या है? मुश्किल है ना मिलना? मुश्किल है ना? आप एक काम करिए, chew it, go back, just keep on, chew it. वहां पर जाके बैठिए, मैं 5 मिनट में आपसे बात करूंगा. चू करते रहिए. आपकी आंख से पानी गिरेगा और वो जरूरी है गिरना. आप चू करिए, तीखा लगेगा. या पूरा पूरा इतना बड़ा तो है, खाइए. सो व्हेन यू आर हैविंग हार्ट अटैक, आप अदरक क्यों नहीं चू करते? अगर हार्ट अटैक आ गया या फिर पैरालिसिस हो गया, अब मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं, मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो मैं साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाऊंगा. सो इफ देयर इज अ ड्रग कॉल्ड सॉर्बिट्रेट जो आप लेके घूमते हो कि चेस्ट पेन हुआ तो फट से जीभ के नीचे रखना है, दैट डॉक्टर फ्रॉम अपोलो और कोकिला बेन टोल्ड मी जसलोक हॉस्पिटल
दैट डॉक्टर, दिस डॉक्टर, पता नहीं कहाँ कहाँ हम चले जाते हैं। अरे भाई काम की बात बताओ। हाँ, दिस ऑर्बिट रेट नीड्स टू बी केप्ट, जीभ के नीचे यहाँ पे रखना है, लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है, पूछ लीजिए तो बोलेगा यार ये तो पूछा नहीं, पूछना पड़ेगा। ऐसे ना बनिए प्लीज, ऐसे ना बनिए। सो व्हाट डज ऑर्बिट रेट और वॉट एवर द ड्रग इज डू, वो मायोकार्डियम का ब्लड सप्लाई दे क्लेम कि 2 ml पर क्यूबिक मिलीमीटर बढ़ा देता है। कैसे प्रूव होगा? हम ही प्रूव करते हैं, हम ही प्रूव करते हैं, हम ही पेट सीटी करके बताते हैं कि इतना ml ब्लड सप्लाई बढ़ गया, राइट? अदरक से 8 ml बढ़ता है। अगर सॉर्बिट्रेट से 2 ml बढ़ता है तो अदरक से 8 ml बढ़ता है। तो सॉर्बिट्रेट क्यों, अदरक क्यों नहीं? आपको नींबू वाला साबुन क्यों चाहिए? आपको नींबू क्यों नहीं चाहिए? नींबू वाला साबुन क्यों चाहिए आप? जब तक आपको यह बात नहीं समझ में आए तब तक माइंडलेसली हम सब कुछ करते रहेंगे, मरते रहेंगे और हमें समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। So these diseases have been made very simple. We want to make it simpler, ताकि आपको बात समझ में आ जाए और आप हेल्दी हो जाओ। 2 लोगों को और हेल्दी करना है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनकी ड्यूटी है। हम एक आंदोलन के तौर पे ये बात को छेड़ रहे हैं। हमने पूरे भारत को स्वस्थ करना है। प्लीज हेल्प मी। जी आप बताएं। Can you please tell us how milk is either a good food or not? Thank you for that question, ma'am. Thank you for that question. Bottom line is, जिस खाने में किसी की आह लगी है वो खाना आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा इस बात को। जिस भी खाने, एनी फूड जिसमें किसी की आह लगी हो वो अच्छा नहीं हो सकता है। Any food that you eat that carries a curse from somebody can never impact you positively. Never, never ever. If you feel transiently it has impacted you positively, very soon you will understand that it had actually impacted you negatively. The positive thing that you were thinking was a wrong impact in your mind. Always remember that. अगर आपने किसी से कोई पैसे भी ठग लिए, if you have swindled money from somebody, suppose, and if you buy food from that money, that food is also not going to impact you positively. We need to be very careful on this. We need to be 100% on this. Now coming to milk. यहां पर इतनी माताएं बैठी हैं, दूध कहां से आता है? Where does milk come from? Milk comes from a mother, whether it is a cow, whether it's a buffalo, whether it's a man or a woman for that matter. Okay? So milk comes from a mother. Or many mothers are here. They need to answer this question. दूध के आने में मां का कोई हाथ नहीं है, दूध के बंद होने में मां का कोई हाथ नहीं है. It's a natural process. Nature is trying to give you a message. Milk only for the child. Had it not been so, as a mother will always feed the son or the daughter throughout life. This is not true neither in the animal kingdom nor in the humankind. You don't feed milk, neither do you have milk. Now coming to the scientific aspect of it. If there is a child less than 2 years of age, if he drinks milk and he pukes it out, milk does not come out. There is something like curd that comes out. Why?
Because there is an enzyme in the stomach called renin which converts milk to curd for digestion. After the age of 2 years, that same child, if he drinks milk and if he pukes, milk will come out. Curd will not come out. So that enzyme that used to digest milk is not there anymore. This is nature. So nature is trying to give you a message. You are not taking it. You are not taking it. Milk only for the child. You show me one more species जो दूसरे स्पीशी का दूध पीता हो. आपने शेर को बकरी का दूध पीते हुए लास्ट टाइम कब देखा था? So you cannot, man cannot be an exception of always to the rule of the divine. There are some divine rules that have been made. You cannot be an exception, and if you are doing so, trust me, आप बख्शे नहीं जाएंगे. You will have to pay for it. People don't understand. Now, you have to also understand that milk is at times medicine. That is a totally different concept. We are drinking milk here not as medicine. We are drinking for health. We are not drinking milk as medicine. And you also need to understand the difference between Gau Mata and cow. Cow is the commercial form. It's fully commerce. हमारी cows इतनी मोटी हो गई, they can't even make love. Inject करके pregnant करना पड़ता है. They become so fat. That is commerce. And pregnant or non-pregnant, any cow or buffalo gives milk. You just have to inject. So you are not actually drinking milk. You are drinking the fluid of that animal. And trust me, this will cause a lot of hormonal imbalances. Can't you see that we are already a hormonally challenged generation? I'll show you. रात को नींद नहीं आती है. We can't sleep at night. क्यों? Pineal gland is not working well. You come here, thyroid. Thyroid, 30%, 40% of the population has got a thyroid problem. Thyroid is what? It's a problem of hormones. You come below that, breast, cancer, lump. Cancer breast, we are not able to cure it. It is a hormonal problem. You come below that, pancreas, diabetes, we are not able to cure it. It's a hormonal problem. You come below that, kidneys. On top of that, there is adrenal glands that causes blood pressure. We are not able to cure that. You come below that, PCODs, endometriosis. Girls are not getting pregnant. This is a hormonal problem. You come below that, prostate. We are getting prostate cancers, and still we are not understanding that we are a hormonally challenged generation. And where are these hormones coming from? They are coming from these animals that we are eating. They are coming from the milk that we are eating, and still we are mindlessly eating it because America has said. Oh, क्या बात करते हैं? Journal of American College of Cardiology में निकला था, and that is the best journal in the world. मैं तो बोलता हूँ भारत से सीखिए. बहुत सी चीज़ों के लिए भारत और भारतीयता पे आना पड़ेगा. इसीलिए हम बहुत पावरफुल नहीं बनना चाहते हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं. क्योंकि गुरु के बगल में आप खड़े होते हैं, एम्पावर्ड फील करते हैं. किसी पावरफुल इंसान के बगल में खड़े होते हैं, श्रंकन फील करते हैं. हम गुरु बनना चाहते हैं. हम दुनिया को ये नॉलेज देना चाहते हैं. सो डोंट गो ऑन दोज फैक्ट्स कि नहीं अमेरिकन उसमें क्या निकला था. यूज योर कॉमन सेंस. सो डिड आई आंसर योर स्मॉल question in an extended way? Once again? Soya milk. And? Almond milk. Yes, you can have these, but don't have it from the market. Please make it at home. आप nut milk
घर पे बनाइए, कोकोनट मिल्क घर पे बनाइए। एंड ट्रस्ट मी, आई एम श्योर मेनी पीपल विल बी फॉन्ड ऑफ कॉफी। आप कॉफी पीजिए, कॉफी बुरी चीज नहीं है, उसमें मिल्क, कोकोनट मिल्क डालिए, उसको गर्म मत करिए, उसको वैसे ही 2 चम्मच डाल लीजिए। इट विल बी अ मच टेस्टियर कॉफी देन व्हाट यू हैव हैड। सो मेक इट एट होम। So very quickly, Yes. know something about diabetes. Because I am having sugar, what many restrictions I have. Thank you for that question, sir. I will definitely answer that question. Yes. So much more surrogacy. So much? Surrogacy. So what about those kids? Once again, Surrogacy. I did not understand the first part of the question. You are a vegan. But like my friend, a grandchild was born with surrogacy. So what about that child? She's going to birth other people. All your boys. See, you're talking about an exception. And normally, surrogacy is not the rule of nature. It is not the rule of nature. And surrogate mothers, if suppose there is a surrogate mother, she should feed the child for at least 6 months. They don't do for medico-legal purpose. The medico-legal purpose gets defeated. And this is where this does not impact the parent, the male or the female parent. It impacts the child. Because जिसने माँ का दूध नहीं पिया है, ट्रस्ट मी, जिसने माँ का दूध नहीं पिया है, उसके अंदर ना वो ताकत रहती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इस दुनिया को झेलने के लिए ताकत माँ के दूध से आता है। माँ के दूध जैसा कोई जवाब नहीं है उसका। That is not natural, madam. So let's not even talk about now talking about diabetes and blood pressure. हम इसको बीमारी ही नहीं समझते। हमें 72 hours लगता है maximum. I don't know any diabetes that cannot be cured in 72 hours. I don't know of any diabetes. Within 72 hours, blood sugar will be normal, all drugs stopped, whether he is on injectable or oral anti-glycemic agents. Diabetes is not even a disease. We consider it a very minuscule kind of disease. It's not a disease. Blood pressure. Now talking about blood pressure and diabetes both. Diabetes, first I'll finish off. Diabetes is not a blood sugar disease. Did you know that? How many of you think that diabetes is a blood sugar disease? I'm sure all of you must be thinking. Diabetes is a blood sugar disease. Diabetes is not a blood sugar disease. Blood sugar is an effect of diabetes, not the cause. The cause of diabetes is hyperinsulinemia. If you are secreting insulin more, you will get diabetes. So when do you secrete insulin more? If you are eating every time. You are eating every 30 minutes. ऐसा लगता है पेट में महिषासुर घुस गया है। नहीं पता नहीं, मैं ये खा लूं, वो खा लूं, और खाओ मरो। 8 घंटे का गैप दो खाने में। Give 8 hours gap between 2 meals. And what do you call a meal? A nariyal pani is also a meal, please. It's a meal. Have water. Wait for 8 hours. Then have food. Because it takes 7.5 hours for the body to metabolize insulin. So if you are just giving a gap of 8 hours between 2 meals, you are curing your diabetes yourself. This is time as medicine. I just showed you when we use skin as kidney 2.0, what are we doing? We are using heat as medicine. Now I am going to show you posture as medicine.
If you do not use backrest, and if you sit straight, don't use backrest as if you are sitting on a stool, right? You take a cuff. If you are hypertensive, take a cuff, measure your blood pressure, then sit straight for 5 minutes, measure your blood pressure again. You just see the difference. You will understand that this blood pressure was due to my posture. The body requires blood pressure to be increased in stupid postures to make the blood go at vital organs. If you are just improving your posture, the blood pressure comes back to normal and you are taking medication for it. I mean, we have to have basic understanding of this body and the disease process. Unless we have that, we will be mindlessly looking at this medicine, this doctor, that doctor, and going from here to there, not achieving health ever, and getting thinned out from our pocket line. So we need to understand this. Really enjoyed the session. Thank you so much. Regarding the balancing the acid in your body, can you give us two tips how to balance? One is breathing, and the other tips. One and second question is on psoriasis. What is the cause? What can we do? What is the cause? Okay. So psoriasis is an autoimmune disease. We just mentioned it is not a disease of the skin. That is why skin specialists are not able to cure it. Skin specialists, if I am not being quoted, many of my friends are skin specialists. हम उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं कि बस तेरे पास तो 2 ट्यूब होता है, एक दे दिया 6 महीने लगाओ नहीं ठीक हुआ, फिर दूसरा दे दिया 6 महीने लगाओ नहीं ठीक हुआ. तो it is not a skin disease, it is a gut disease, which is why we gave you a gut cleansing formula so that your skin disease goes off, and you will see by following it your skin disease will go off because हमने वो remote पकड़ लिया है. Acid balance. See, what you do is, apart from that, if you go through the prescriptions that I have, there are so many patients who have shown me today. If you go through the prescription, उसमें हमने सब कुछ, we have taken care of everything. How will you maintain your acid-base balance? If you see, everybody has got that lam, vam, ram, yam. So you increase your vibrations. Once you increase your vibrations, you will go towards the alkaline side. Immediately, like many people will have this prescription, so I'll show it to you so that you will understand. This body is run by Pranamaya Kosh, this physical body that you see. Modern medicine is blind to what I am just about to say. Modern medicine feels this is a car, the carburetor, if it is replaced, the car will speed up again, and it does not happen like that in the body. It does not happen like that. That is why transplants don't work. This body does not happen like that. So how does this body function? This body functions on energies, which is why we say energy healing is the future of medicine. The future of medicine will never be tablet healing, it will be energy healing. And if you can increase energies of the body, cancer cell, the energy of the cancer cell, it vibrates like this. Rest of the cells vibrate like this. And cancer cell vibrates like this. If there is something that can increase the vibration of the cancer cell, cancer can get cured. Which is why if you see in my prescriptions, we have a very balanced way of going through it. If you have to increase your
energies. How do you do that? So there are 7 energy centers in the body. Sorry, 6 in the body, 1 outside the body. They are called where rivers meet. रिवर को नदी कहते हैं. नदी जहां मिलती है उसको संगम कहते हैं. नाड़ी जहां पे मिलती है उसको चक्र कहते हैं. दोनों जगह एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, राइट? सो यू हैव द मूलाधार चक्र, द मूलाधार, द स्वादिष्ठान, द मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार. ये चक्र है बॉडी में. इनके बीज मंत्र हैं. लम इज द फर्स्ट बीज मंत्र, देन वम, देन रम, देन यम, देन हम, देन ओम, देन राइट? ये मैंने एक तरीका निकाला एक ही सांस में बोलने का, सो दैट यू फील एनर्जेटिक इमीडिएटली. सो आई विल शो इट टू यू. lam ram yam So in one go you have touched all these centers. So which is why if you see in our prescription that we have mentioned, for each and everybody we have this, because you need to increase your energies that way, so that you can counter the disease process without any medication. नमस्ते सर. सर बॉडी में मिडिल यहाँ पर पेन होता है एंड दैट फॉर द बॉडी, और वो बॉडी में यहाँ पे पेन होता है और मोशन के बाद. Okay. So which means आपका एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस प्रॉपर नहीं. अगर एसिड आपका ज़्यादा होगा, पेन विल ऑलवेज, पेन का मतलब है एसिड बेस बैलेंस में एसिडिटी का पलड़ा भारी हो गया. और मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आती है कि जितने दुनिया के पेन किलर्स हैं एसिड लेवल बढ़ा देते हैं बॉडी का. इफ वी गो बाय दिस बेसिक, I would want to ask कि पेन किलर से पेन गया कैसे? प्लेसिबो इफेक्ट. अगर आपके दिमाग में है कि उससे पेन जाएगा तो चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ प्लेसिबो इफेक्ट. और आपके दिमाग में है कि दुनिया का कोई भी दवा दे दो पेन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ नोसिबो इफेक्ट. मोस्ट ऑफ दीज मेडिसिन वर्क ऑन अ प्लेसिबो इफेक्ट. आपको लगता है कि चला जाएगा. ये जिनको माइग्रेन था, हाउ इज शी नाउ? अदरक खा लिया? नहीं, उसको मुंह में नहीं रखना, उसको खा लेना है. उसको खा लेना है, आंख से पानी करना जरूरी, आपका पेन चला जाएगा. और प्लीज आपने यहां पे रखा हुआ, उसको चू करिए. अदरक को चू करेंगे, आंख से पानी निकलेगा जरूर. और कई लोगों की आंख की पानी सूख जाती है, उसके लिए भी अदरक खाना जरूरी. वैसे भी ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 2022 का नोबेल प्राइज है. इस पे पेपराजीन रिसेप्टर्स हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं बाय नाइट्रिक ऑक्साइड. सी, whatever I will tell you, it will totally be scientific. I will prove it to you कि मैंने जो भी बोला, it will be a scientific thing. I will never say anything which is not scientific or which I cannot prove. Okay, first of all, what you were saying about diabetes, true for juvenile diabetes also? No. So that is separate. There are 3 types of diabetes. Type 1, Type 2 and Type 3. How many of us have heard about Type 3 diabetes? You've heard about it? Type 3 diabetes. Alzheimer's disease is called Type 3 diabetes. Type 1 diabetes is an autoimmune disease. So it's entirely different from this.
It's an autoimmune process. And as I told you, autoimmune patients, when they come to us, internally we feel very happy because we know that 100% we'll be able to cure them. 100%. Many times we will not say 100% for many things. But for autoimmune, we are very happy. Internally, मुझे लगता है ये बहुत simply ठीक होगा. Except type 1 diabetes. Type 1 diabetes takes a long time, 6 months to 1 year. And many times it behaves erratically. So now what we have tried to do is, apart from that, we are trying to involve energies to cure. And the results are fantastic. So that is why we feel. And type 3 diabetes, Parkinson's or Alzheimer's disease, dementia. Why has dementia occurred? You have to unlearn that brain utilizes glucose for energy. You have to unlearn this and relearn that ketone bodies is the best food for the brain. And ketosis comes by fasting. That is why people from Bihar, they crack the civil services because they don't eat much. The brain works more. Trust me, if you eat less, the brain works more. If you eat more, you feel sleepy and then you don't perform. Secondly, I have calf pain and I wake up in the night with my fingers and legs completely stiff. Of course, I'm trying my affirmations, my legs are on the water. That happens every day. But it does not work. Now I am Monika's friend 6 years in a year. I follow her diet quite strictly, but it hasn't helped. Okay. So it's going to help. How much time do you want Please to give me give? a diet for the day. Simple diet you can all follow for the day. This goes to them. Okay. So from next time, if you really want कि आपके did you know that your calf muscles are your second heart? No, I won't forget. I'll remember it. Please tell me. So now you will get no, but you will now. Thank you for asking me this question. Tomorrow, Jonita, मेरे को बताना जरा. आप आज today, where do you stay, man? Pedder Road. So today you are going to sleep on the floor. Okay? And by tomorrow morning, you're going to give the first call to Jonita and you're going to tell her कि आपका calf pain कैसा है. Straight on the floor. No. That is your problem is, yes, for cement. Say, then in that case, the idea is, why do we say remove your shoes? You have to earth yourself. Once you are earthing yourself, your blood becomes thin, otherwise it will remain thick. Don't you understand common sense things? There will be many engineers here. This is an electrical body. Electrical body, what happened? Why is it an electrical body? How can I say that? Because electricity switches off and the person dies. Isn't it? How does a person die? The electricity from the body goes. How do I know that? Because what is the last thing that we do before we declare dead? We give electric shock. Why do we give shock? If we can revive the electricity of the body, electricity will revive mechanical functions automatically. So, this is an electrical body. If electricity goes haywire, it goes in this plug. What will you do? You will call the electrician. What will the electrician do? If he will not understand anything, he will earth it. Why have you not earthed yourself? You please understand, what happens is, we are just trying to earth you. If you don't do that, many times this excess, we are wearing shoes like this, and then this is bad conductor of electricity.
right? And then we are using phone, which is giving more electricity to the body. This electricity is going on and it is not getting earth. तो कभी दिमाग में चला गया तो एपिलेप्सी आ जाएगा, कभी हार्ट में चला गया तो एट्रियल फिब्रिलेशन आ जाएगा, कभी किडनी में चला गया तो किडनी श्रिंक कर जाएगी. We don't understand that. This is very simple. We have to earth ourselves. We are not doing that, which is why I said you have tried many things, you have studied so much about it. Do it today and let me know. At least 10 to 15 hours, many of your body parts have to be on the ground to earth yourself, so that you will see the circulation going on well and you will see your pain vanishing. Huh? Ah, that's fine. That's fine. And you let me know tomorrow morning. मैं यहीं पे हूँ, मुंबई में हूँ, मुलाकातें होती रहेंगी. One day diet. Okay. So one day diet is from morning till evening. You don't have to eat after sunset. If you stop eating after sunset, most of the emergencies that you know about will be over. Accidents भी emergency है ना. Accident क्यों हुआ? तफरी करने गए थे, दारू पीने गए थे, वहां से खाना वाना खा के आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया. अगर सनसेट के पहले खा लेते तो ये नहीं होता. हार्ट अटैक्स will always happen post dinner. We need to understand, and Corona taught us many things, that if Akshay Kumar, who claims that he is the fittest, if he can get Corona, and if Saurav Ganguly claims he is the best cricketer in the world, if he can get a heart attack, which means we don't understand health. This means we don't understand health. Had we done that, इनको ये सब चीजें होती नहीं. So it depends upon आप क्या खाते हो. So nothing after sunset, one full day, 2 meals only. भारतीयता पे आना पड़ेगा. 75 years of independence from the Britishers we are celebrating. You must have heard the Prime Minister saying, लाल किले की प्राचीर से, और गुलामी की हर वो चीज हमें काटनी पड़ेगी. Breakfast, lunch and dinner should have gone back with the Britishers and we should have come back to भारतीयता. 2 जून भोजन, हम 2 जून भोजन पे आ जाए, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए. फूड प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए. 2 जून भोजन. 2 जून भोजन का मतलब है भोजन एट ऑन द 2nd of June? नो. 2 जून भोजन का मतलब हुआ 2 बार भोजन ओनली. So 1 9 to 10 o'clock in the morning and 1 5 to 6 in the evening. That's it. And 50% of your food, whatever you eat, first, whatever your appetite is, eat 75% of that. Don't eat full. You give time for breathing, because if you eat full, your diaphragm goes up and shrinks the lungs. You can't breathe more. So eat 75%, and whatever you eat, 50% of that food should be raw food. 50% can be cooked food. While you are eating cooked food, keep in mind that it should not contain दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी नहीं होना चाहिए. That is ideal food that will make you live for 140 years. Why 140? Why not 100? Again, we are going against nature. Anything in nature survives 7 times of its maturity date. Maturity. A man matures at 20. What is the reason you should leave this world before 140? There is no reason why. People when they turn 70, उनको लगता है अब तो बस ग्रेव में जाने का ही टाइम आ गया. No way. You have not even reached 50% of your age, is what I feel.
So you should work towards that and have only 2 meals in a day, nothing after sunset. You will see all your pains and aches also going. Please throw some light on ankylosing spondylitis. How we get cured? Jay? Yes, ankylosing spondylitis. It's an autoimmune disease, sir. And as I told you, autoimmune disease is very simple to cure. Very simple. We feel very happy when we get patients of autoimmune disease. We know that this patient will be cured. That's for sure. There are processes, the basics, as far as eating is concerned, there are many processes that are followed. Like I told you, it is not only food. As I told you, many diseases are daivik, adhyatmic. So in the daivik, in the physical aspect, it is the food that we use as medicine, and food, as I just told you, if you bring your known ones who have got ankylosing spondylitis into this food, you will see developments from tomorrow onwards. From next day onwards, you will see developments. Yes, please. Good evening, sir. Thank you so much. I'm from commerce background, but I want some kind of senior videos on YouTube, so it's a whole lot of inspiration. And my question is, why does cough develop in our body and how does it impact our body? And the second part is that my sense of smell has reduced a lot in the body, and what could be the cause in the name? Okay, thank you. Thank you for that question. Cough is called phlegm, and phlegm is produced whenever you are eating any fat that is boiled will produce a phlegm. So if you are, अगर तेल में आप फ्राई करके कुछ चीज खा रहे हो, phlegm होगा ही. And the second part of your question was sinusitis. Phlegm. Phlegm impacts your body negatively most of the times when it is not required. Some part is required, that is okay. But apart from that, it impacts you negatively. This body is all about transmission of energy. So energy gets dampened when you have phlegm, isn't it? So how do you come out of it? The best way is fasting. You fast for a day, you will see all the phlegm disappearing. Ji. Sense of smell. Okay, that was the sense of smell is because you are not using your nose. Can you stand up? Yeah, okay. So your right nose appeared to be slightly blocked. What you do is, there is something called Nadi Shuddhi. If you go through my videos, you will get Nadi Shuddhi. You do it for 4-5 days, all your smell is going to come back. Use this diet pattern, which I just shared. Everything, till the time you are breathing, everything can come back to normal. If you felt that this is permanent, nothing is permanent. Your life is not permanent. This body is not permanent. The cosmos is not permanent. Nothing is permanent. So how can diseases be permanent? You get my. So it will take 4-5 days. Your smell will definitely come back. You do Nadi Shuddhi. Doctor, good evening. Bowling notices at the back. Manual. When making very short and good evening to the score. Doctor, I have a very small simple question. Maybe applicable to everybody. We have been taking medicines for blood pressure and diabetes. My wife is saying blood medicines are constantly. You suggest we can stop it immediately. Will it not be fatal? Yes, thank you for that question, sir. Apart from steroids, steroid is a dangerous drug. Steroid, if you are being given, which means
that is the end of science that modern medicine knows. Because anything, if you're giving steroid, which means मेरी तो बस हो गई, बाकी तो तुम देख लो क्या करना है, right? Apart from that, because that is dangerous to start and dangerous to immediately stop. Apart from that, any and many medications can be immediately stopped or tapered as the case may be. If suppose somebody is having a thyroid problem and somebody is taking medication for a long time, and if it is felt that it is primary or secondary hypothyroidism. Primary hypothyroidism means the gland is at fault. Secondary hypothyroidism means there is the metabolism is at fault. So if the gland is at fault, in both cases you will get T3, T4 low and TSH high, in both the cases, right? But if you look at the metabolism here, the height is 5'2" and the weight is 85 kg. So you know that this is a metabolic problem rather than a glandular problem. So metabolic problems can be stopped immediately because it's not going to serve any purpose. You are stimulating your thyroid gland and your thyroid gland is not getting stimulated because metabolism is annulling it. So it can be stopped immediately. If there is a thyroid gland that is at fault, it should be tapered. If the thyroid gland is at fault, like in many cases of Hashimoto's thyroiditis, but that's again an autoimmune process. But whenever it is so, the TSH will be 100 or 150. It will not be 12. So she told me that her TSH is maximum 12. 12 means it's a metabolic failure. You can stop the drug immediately. So we normally don't take very harsh decisions, but we are very clear in mind as to how we want to go about it. Okay, don't be fearful, and many times people feel heart attack aa jayega. Please, don't give. By the way, I will clear many doubts today. हार्ट अटैक, अगर ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा होगा तो क्या आएगा? पैरालिसिस. एंड हार्ट अटैक आया, कितना ब्लड प्रेशर होगा तो आएगा? हार्ट अटैक आएगा. अगर किसी का 200/120 है तो डर लगता होगा ना, पता नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा. हाउ मेनी पीपल फील? You feel. Heart attack always occurs in low blood pressure, please. It will never occur in high blood pressure. डरने की जरूरत नहीं है. High blood pressure can cause stroke. It will not cause a heart attack. This is science. If you want to check on Google. I am sure it will be there. Heart attack occurs in low blood pressure. और बॉडी लो ब्लड प्रेशर कभी नहीं करती है. इट इज द ड्रग्स दैट मेक द ब्लड प्रेशर लो. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप कौन सा ड्रग ले रहे हैं. और लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए ड्रग्स नहीं चाहिए होते. मेनी पीपल हैव गॉट लो ब्लड प्रेशर. लो ब्लड प्रेशर डज नॉट रिक्वायर ड्रग्स, इट जस्ट रिक्वायर्स वेगल स्टिमुलेशन. यू स्टिमुलेट द वेगस नर्व, द ब्लड प्रेशर विल कम बैक टू नॉर्मल. So these are very, very small things that need to be taken care of and kept in mind before you embark upon journeys like this. So thank you very much.